Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ACCA का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छी इल्मी और बसीरत अफरोज़ कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया. And it's a great experience to be here and to learn from the knowledge, from the expertise, and from the perspectives and experiences of the panelists and all the professionals. I am honored to represent Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority, the leading revenue collecting agency of KP, which is mandated with the collection of sales tax on services. And I'm here to share with you the digital journey of KPRA. और जब मैं बात करती हूँ KPRA की digital journey की, तो I am speaking about an organization that believes technology not as a support system, as a support function. It is the driving force behind transparency, efficiency, and service delivery. 2019 में practically ये सफ़र शुरू हुआ जब KPRA एक budding, एक young organization थी, when our systems were manual and our processes were fragmented. हमारी tax base सिर्फ 4,000 tax payers पर मुश्तमिल थी और हमारा जो revenue था वो 6 billion था. And at that time we realized that digital transformation was not just an option. That's our future. And it was understood that sustainable progress comes from the systems that learn, adapt, and evolve. Ladies and gentlemen, KPRA ने invest किया अपने in-house ICT directorate में 2018-19 में जब उन्होंने officers induct किए. और जैसे मुर्तज़ा साहब ने rightly mention किया ownership, और इन officers ने अपनी organization को own करते हुए learn की new skills, अपने आप को evolve किया और mindset shift हुआ from maintaining to transforming. इस वक्त हमारा ICT system ना सिर्फ हमारे internal operations को empower करता है, बल्कि it has connected thousands of taxpayers across the country through seamless digital services. थोड़ा सा वक्त लूँगी क्योंकि काफ़ी वक्त बीत भी चुका है और IT इनिशिएटिव्स जो KPRA ने अभी तक किए हैं उनके बारे में थोड़ा मुख्तसरन बताती चलूँ. सबसे पहले तो मैं KPRA के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगी. जैसे कि आप सब जानते हैं डाटा एनालिटिक्स इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रादर अ की रोल इन द डिसीजन मेकिंग. एंड टू इनेबल दिस KPRA हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड इट्स ओन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम which takes tax data, performs advanced analysis of the data. और हमें जो अपनी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट्स, ऑडिट, जो विदहोल्डिंग ट्रेंड्स हैं अक्रॉस ऑल रीजन एंड KP, उसके एनालिसिस के लिए रियल टाइम हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इसके अलावा जो हम अपने ऑफिसेस को, रीजन्स को थ्रू कलेक्टरेट, जो हमारा कलेक्टरेट टारगेट्स असाइन करता है, मॉनिटर करता है, वो भी इसी सिस्टम के ज़रिए करता है. देन ऑल ऑफ यू are aware of the RIMS, Restaurant Invoice Monitoring System, जो कि इस वक्त हमारे तकरीबन 350 रेस्टोरेंट्स पे अक्रॉस KP इस वक्त डिप्लॉयड है और हमें रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ इनवॉइसेस मिलती हैं हमारे सेंट्रल डेटाबेस को. एंड इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्टोरेंट्स एंड सैलून्स. इवन जो हमारा टैक्स पेयर है वो अपनी इनवॉइसेस वेरीफाई कर सकता है हमारी वेबसाइट पे और ये देख सकता है कि जो टैक्स उसने दिया है वो आया डिपॉजिट भी हुआ है कि नहीं. फिर चलते हैं ERPs की तरफ. हमारी जो ICT टीम है उन्होंने इन हाउस इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग डेवलप किए जिन्होंने हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ऑटोमेट किया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूव की. हमारा GRS सिस्टम जिसमें हम कंप्लेंट्स लेते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कॉल सेंटर है, सिटीज़न पोर्टल है, और इस पे फिर हम इसको टाइमली मैनर में हम इसको मैनेज भी करते हैं. और वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड एनहांस्ड एंड इंक्रीज टैक्स पेयर सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ दैट. पिछले 20 माह में हमने जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स किए उसमें हमने एक लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ताकि हम अपने कोर्ट केसेस को ऑनलाइन ट्रैक करें, मॉनिटर करें. अपील्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ताकि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस क्वार्टर से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि चाहे वो साउथ में है, नॉर्थ में है, वो ऑनलाइन अपनी अपील्स फाइल करें, अपनी जो अपील नोटिस हैं उसको रिसीव करें और ऑनलाइन हेयरिंग जो है वो कंडक्ट हो सके.
اسی طرح گوگل میپ ایکسٹریکٹر ٹول آپ سب اس سے ظاہر ہے واقف ہوں گے. کے پی آر اے نے اس کو جو اس آئی ٹی سولوشن ہے اس کا اس طرح اسمارٹ استعمال کیا کہ ہماری جو آئی ٹی ٹیم ہے it gets the information regarding the location of the potential taxpayers from that Google, extractor tool. اس طرح ہم اپنے ٹیکس پیئرس کو ویژولائز کرتے ہیں آن دا میپ اور ہماری آؤٹ ریچ اس سے امپروو ہوئی ہے, ہماری مانیٹرنگ اور کمپلائنس جو ہے انفورسمنٹ کی وہ اس سے امپروو ہوئی ہے. سنگل ونڈو پورٹل اس وقت پورے صوبے میں اگر کوئی اینٹیٹی کوئی آرگنائزیشن انٹیگریٹڈ ہے سنگل ونڈو پورٹل کے ساتھ تو وہ کے پی آر اے ہے. ہمارا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے, اینڈ ناؤ دا انٹائر سیس کلیکشن ہیز بین آٹومیٹڈ اینڈ ریڈیوسڈ مینول انٹرونشن. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہمارے فیوچر پلانس ہیں ہمارے انفورسمنٹ اینڈ ریکوری مینجمنٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح ڈیجیٹل نوٹس مینجمنٹ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از بین انٹیگریٹڈ ود ٹیکسٹ ڈیٹا to help KPRA predict future revenue trends and identify potential compliance risks. AI-based analytics units ہم KPRA میں اسٹیبلش کر رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کو اسٹرینتھن کرے گا بلکہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اپنے لارج والیوم آف ٹیکسٹ ڈیٹا کو انالائز کریں گے, ٹرینڈس ہم جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے, اینڈ اٹ ول آلسو سپورٹ پریڈکٹیو ماڈلنگ فار بیٹر ریونیو فورکاسٹنگ اینڈ پالیسی فارمولیشن. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 2019 سے لے کے 2025 تک یہ جو جرنی میں نے آپ کو مختصراً بتائی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں نے مینشن نہیں کی وقت کی ظاہر کمی کی وجہ سے, اٹس نتھنگ شارٹ آف ٹرانسفارمیشن. کے پی آر اے کی جو ڈیجیٹل ایولیوشن کی اسٹوری ہے اٹس اے اسٹوری آف بیسیکلی فیوژن آف ہیومن ٹیلنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ریونیو گروتھ. 6 بلین سے آج ہم 51.6 بلین پہ کھڑے ہیں 2025 میں, اور یہ ٹرانسفارمیشن اٹ واز پاسبل تھرو ویژن, ٹیم ورک اینڈ انوویشن. اور جیسا کہ ہمارے چیف گیسٹ کہہ کے گئے ہیں کہ کلائمیٹ از دا نیو کرنسی, تو میں کہتی ہوں کہ ویئر ڈیٹا along with climate is the new currency and innovation is the new infrastructure, KPRA's transformation through technology and talent defines that public institutions can evolve to serve better, respond faster, and lead confidently. Thank you. اور اتنی جو ہے اچھی کانفرنس کا انعقاد کرنے پہ بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. Thank you, ma'am. I request you to please stay on stage. Yes. And I would like to invite our guest of honor, Mr. Asfar Ahsan, and ACC leadership team to please come on stage to present Momentum. Amit, please come on stage. Asad. Ji. 2-3. Thank you, everyone. Next.